Good evening, everyone. Welcome back to Spoken English on Exampur channel. I'm your trainer Vishal Sir, and I hope you all are doing fantastic. And I'm really sorry for being late today, as I had a very hectic schedule of classes. I was teaching without any break. I have been teaching. I have been taking classes since 8 o'clock morning. So I just got a little late in the preparation of my PPT. Thank you very much for waiting. I'm fine. Hi guys, how are you? Good evening. I'm here only, Pooja ji. Thank you very much for your patience and waiting for the class. All right, so let's start today. I've come up with another immediate surroundings topic: entertainment. You must have heard Vidya Balan's dialogue, entertainment, entertainment, and entertainment. In the same way, I say I'm a teacher. I'm not here to entertain you, okay? I'm here to teach you something. The role is absolutely different. Okay, pranam Adarsh ji, Shukla ji, Pavan Kumar ji, good evening. Sachin Sharma ji, good evening. All right, all set. I guess कुछ लोग वेट कर चले गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाँ 10 मिनट्स थोड़ा हो गया तो थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ गया होगा. It's fine, I can understand. So let's begin the session today. Entertainment. Let's learn some word on entertainment so that you can talk about your favorite movies, your favorite serials, your favorite superstar. If somebody talk to you in English about any things whichever related to entertainment. Good evening everyone. Pleasant evening. All right, so let's start the session. Okay. So, entertainment. My first question is, do you like watching films? Of course. Who doesn't like watching films? Everybody does. Okay? So, we all like watching films. Now, discuss your favorite films. So, sometimes, we talk about the movies that we watched last time, or the movie which we like to watch anytime. We like it like anything, and sometimes even in the interview, the interviewer may ask you that describe or tell me the story or the script of the movie you watched last time. So this question is also helpful in interview, personal as well as professional, taking care of. That's what Exampur is all about. Okay, so I've given you here phrase bank when you talk about your favorite movies. So you can use some of the phrases here, listed here. I've written here, for example, heartwarming tale. Heartwarming tale means which are love story, romantic, and it's touching your heart. है ना, वो दिल को छू जाती हैं कुछ कहानियाँ. तो कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, उनको heartwarming tale बोलते हैं. The movie was about friendship. It was an animated movie. Animated होती है जो cartoons में आप movie देखते हैं, ठीक है, उसको animated बोलते हैं. Lots of action. Sometime you watch some action movies. I feel full of life after watching some movies. You feel good about the life, and you actually enjoyed it a lot. So you say, I feel full of life. Some movies, some scenes of the movie made you cry. रुला देते हैं. It's a warm feeling inside. Sometimes you watch very emotional movies and you say, it's a warm feeling inside about the country, especially the movies on patriotism. Learn this word, patriotism. देशभक्ति को बोलते हैं. Patriots देशभक्त होते हैं. Patriotism देशभक्ति होती है. ठीक है. So taught me valuable lessons. Sometimes we watch movies like Three Idiots, where you learned a valuable lesson, and then some movies inspired you like Bhag Milka Bhag, जिसमें वो भाग भाग कर आपको inspired करता है. All right, so you can use these words. I want you guys to get familiar with these phrases and words so that you can talk about your favorite movies. All right, let's
let's read what I have written about my favorite movie here. One of the best movies that I like, and I can watch this movie anytime. It's the best movie that I have ever seen, and it's Kal Ho Na Ho, starring Shah Rukh Khan, Preeti Zinta, and Saif Ali Khan. I like this movie. I love this movie so much that I can watch it anytime. Okay, so my favorite, this is how you talk about your favorite movies. My favorite film is Kal Ho Na Ho. It's a heartwarming love story. It's a very nice, heartwarming love story. ना दिल को छूने वाली love story है, ठीक है. शाहरुख खान और प्रीति जिंटा आर इन लीड रोल, है ना, मेन रोल में है वो दोनों, तो लीड रोल बोलते हैं उसको, ठीक है. इट मेक्स मी क्राई एवरी टाइम आई वॉच दिस मूवीज. It's definitely true. Every time I watch this movie make me cry. आंखों में आंसू आ ही जाते हैं. Okay, so that's how you describe about your favorite movies. I want you guys now, it's your homework to use these phrases and words and talk about your favorite movie. If you do not have any company to share, please be yourself. Have yourself as a company with you and talking and sharing about your favorite movies, or else you can record कर सकते हैं कैमरा लगाकर वीडियो को. कोई भी तरकीब सोचिए, कोई भी आइडिया, कुछ भी यूज कर, लेकिन इंग्लिश बोलनी है आपको. इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है, भले ही अकेले ही सही, ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. यू कैन यूज दिस फ्रेजेस एंड दैट्स हाउ यू कैन talk about your favorite movie. Let's move on to next thing. Vin Diesel is my favorite superstar in Hollywood. I like his voice. इसका आवाज, he has a very very heavy voice. बहुत भारी आवाज है इसका, and I love the way he delivers the dialogue. You must see him, and you must have seen him in Fast and Furious movie. If you like watching Hollywood movies, तो आपने देखा होगा, ठीक है. Fast and Furious movie की जितनी भी सीरीज हैं उसमें विन डीजल है, and I love this guy. जिस स्टाइल से वो बोलता है, एक्शन करता है, I love it. I love watching Fast and Furious. Okay. Sir, I have one question. Yes, Akansha ji, you can ask me what's your question. Okay, so here I have given you some information about action movies. If you like action movies, then you can talk about action movies. So I like action movies. I love the special effects. स्पेशल इफेक्ट्स क्या होते हैं मूवीज में, आपने देखा होगा, बड़ी दूर दूर से एक्टर को दिखाते हैं कि वो जंप कर रहा है, और एकदम से बड़ा क्लोज सीन दिखाते हैं, ट्रक इधर से मूव हो गया. फास्ट एंड फ्यूरियस में आपने देखा होगा स्पीड से कार ड्राइव हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं एकदम से. सो दैट्स व्हाट स्पेशल इफेक्ट्स. और स्पेशल इफेक्ट्स कुछ ऐसे भी बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा ग्रीन कर्टेन लगाकर पीछे कंप्यूटराइज स्पेशल इफेक्ट्स करते हैं, जो आप देखते हैं फाइटिंग सीन्स वगैरह के, वो एक्शन मूवीज में होता है. Vin Diesel looks like Yogi ji. Yes, I have heard it before. मैंने पहले सुना है इसको. Friends are absent today. Maybe वो वेट करके चले गए होंगे गुलशन जी. Okay. Good evening Shweta ji. All right. So एक्शन मूवी के बारे में कैसे बात करते हैं आप? स्पेशल इफेक्ट्स बोल सकते हैं कि स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं. देन यू कैन से एक्शन फिल्म इज अ फिल्म जेनर. जेनर मींस कैटेगरी. ओके, सो यूज द वर्ड जेनर. सो इज अ फिल्म जेनर इन विच द प्रोटैगोनिस्ट होता है, जो एक्टर होते हैं, जो मेन एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, उनको प्रोटोगोनिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है. और प्रोटोगोनिस्ट्स आर थ्रस्ट इनटू अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टिपिकली इंक्लूड वायलेंस, एक्सटेंडेड फाइटिंग, फिजिकल फीट्स होती है घूसे, फिजिकल फीट्स, घूसा मारते हैं, ठीक है. एक्सटेंडेड फाइट, लड़ाई झगड़ा दिखाते हैं आपको. वायलेंस, हिंसा को बोलते हैं, ठीक है. एंड व्हाट वी हैव, रेस्क्यूज एंड फ्रैंटिक चेजेस, है ना. एक हीरो हीरोइन को बचाने जाता है, विलन को घुसा मारता है, फीट्स, ठीक है, पीटता है उनको, तो आपको रेस्क्यूज दिखाया जाता है, बचा कर लाना, ठीक है. और फ्रैंटिक चेजेस आपने देखा होगा, जैसे वॉर मूवी में मैंने देखा था, वो ऋतिक रोशन का पीछा करता है, जो टाइगर होता है ना, वो बाइक पे कैसे इधर उधर चल रहा है, जल्दी जल्दी पतली पतली गलियों में, फिर जंप कर रहे हैं, गिर रहे हैं. दैट्स कॉल्ड फ्रैंटिक चेजेस. सो दैट्स व्हाट
we see in action movies, and I want you guys to get familiar with these words. Genre, protagonist, okay, physical feats, extended fighting, frantic chases. Okay, so if you have these words, you know the meanings of these words, then you can talk about action movies, you can talk about your favorite movies. All right, I hope this is really going to be helpful. Now you'll be able to talk about your favorite superstars in movies. At least you have some words and sentences with you. Okay, good evening Muskan ji. Good evening. All right, let's move on to next slide. Listening drill. Okay, now I want you guys to be all ears. Be ready with your headphones or the ear plugs, whatever the leads you have. I'm going to play an audio today, but this time you are not only going to listen to the audio, but you have to answer the questions as well. I have put some questions here. Based on your listening, you need to answer these questions. Okay, and I have arranged the questions in a chronological order. ठीक है, chronological order का मतलब होता है जिस ऑर्डर में ऑडियो आप सुनेंगे उसी ऑर्डर में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो आप ऑडियो के सुनते हुए साथ में क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं. सो यू कैन डू बोथ द थिंग्स टुगेदर साइमल्टेनियसली. मैंने पहले भी साइमल्टेनियसली वर्ड आपके साथ डिस्कस किया है ना. तो जो वर्ड मैं अपने क्लासेस में आपसे बात करते समय यूज करता हूं, मैं उन पर जोर डालता हूं, उनको सुनिए. जैसे मैंने आज आपको पैट्रियोटिज्म, पैट्रियट वर्ड बोला, साइमल्टेनियस वर्ड मैंने आपको बोला, तो इसका भी ध्यान रखिए. Amjad Ali ji, if you need to improve your spoken skills, please speak. And please understand, spoken skill and communication skills are two different things. Okay? Learning to speak English is far easier than learning communication skills, because communication skills include body language, knowledge, okay, and using the metaphor and simile. अगर आप पोएट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपने सीखा होगा कि फिगर ऑफ स्पीच होती हैं, मेटाफर, सिमिली, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, उन सब का यूज भी आपको सीखना होता है. बॉडी लैंग्वेज भी आपको परफेक्ट रखनी होती है, आई कॉन्टैक्ट, कंटेंट, नॉलेज. दैट्स व्हाई आई थिंक यू वर ओनली टेलिंग मी yesterday that I'm not interested in knowing about Valentine's Day. So that's what I told you even yesterday, that knowing about everything is very important if you want to deliver a speech and if you want to have very good communication skills. Okay, spoken is just one element of communication skills. So I would urge you to improve all the areas: listening, okay, speaking, then writing, then listening, and especially updating your knowledge, because you need knowledge to do good communication. Okay, I hope this is helpful. हिंदी में भी बोल रहा हूँ, खाटू श्याम जी, परिवार जी. मैं बीच बीच में बच्चा हिंदी में भी बोल रहा हूँ. अभी मैं इनका, अली जी का जवाब दे रहा था कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट. सो लिसनिंग ड्रिल, बी रेडी. आई एम गोइंग टू प्ले वन ऑडियो. मैं एक ऑडियो चलाने जा रहा हूं और आप लोग इस ऑडियो को ध्यान से सुनेंगे और सुनने के साथ साथ आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे. तो क्वेश्चंस ध्यान से देखिए. एंड आई एम प्लेइंग द ऑडियो, सो प्लीज बी ऑल ईयर्स. बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है रेडी हो जाओ सुनने के लिए ध्यान से. ठीक है, एंड डू बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली. दोनों काम एक साथ करने हैं. ओके, सो हियर इज योर ऑडियो. इट्स अबाउट AR रहमान. ठीक है, AR रहमान जी को सभी लोग जानते हैं. इज वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स एंड म्यूजिक कंपोजर. ऑब्वियसली उन टैलेंट और स्किल्स की उनके अंदर कमी नहीं है. वी ऑल लव हिज म्यूजिक. ठीक है, तो चलिए सुनते हैं AR रहमान जी की लाइफ के बारे में. एंड दैट्स व्हाट आल्सो ऐड वैल्यूज इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. अली जी, लोगों के बारे में जानिए जो अच्छी पर्सनालिटीज हैं, जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं. अपनी नॉलेज अपडेट करिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप अच्छे हो जाते हैं. ठीक है, तो हियर इज योर ऑडियो. ऑन योर मार्क, गेट सेट,
Go. Allah Rakha Rahman was born A.S. Dilip Kumar on January 6, 1966 in Chennai. He started learning the piano at the age of 4 and joined Ilaiyaraaja's troupe as a keyboard player at the age of 11 to support his family after his father's death. He dropped out of school and traveled all around the world with various orchestras. He also accompanied the great tabla maestro Zakir Hussain on a few world tours and won a scholarship at the Trinity College of Music at Oxford University, where he studied Western classical music and obtained a degree in music. He embraced Islam and came to be known as A.R. Rahman. In 1987, he moved to advertising, where he composed more than 300 jingles over 5 years. In 1989, he started a small studio called Panchatan Record Inn, which later developed into one of the most well-equipped and advanced sound recording studios in India. At an advertising awards function, he met one of India's most famous directors, Mani Ratnam, who asked Rahman to compose the music for his next film, Roja, 1992. He went on to compose several great hits for Tamil language films before composing the score and songs for his first Hindi language film, Rangila, 1995. The enormous success of his first Hindi venture was followed by the chart-topping soundtrack albums of films such as Bombay, 1995, Dil Se, 1998, Dal, 1999, Zubeda, 2001, Lagan, Once Upon a Time in India, 2001, which was nominated for Best Foreign Language Film at the 2002 Academy Awards. More recently, he worked with Sir Andrew Lloyd Webber and Shekhar Kapoor, director of Elizabeth, 1998, on a musical called Bombay Dream. At 36 years old, A.R. Rahman has revolutionized Indian film music, and one can only expect this musical genius to reach greater heights. A.R. Rahman became the first Indian national to win a Golden Globe Award at the 66th Golden Globe Awards. He has won several awards for the film Slumdog Millionaire, including an Oscar for Best Original Score. All right, so I hope you must have got the answers of the questions. Yes, I can see some of the answers. वेरी नाइस. हाँ जी, अविराज यादव जी, स्पोकन इंग्लिश क्लास भी चलती है यहाँ पर 5 to 6. यस, ठीक है. So this is a little story about A.R. Rahman, how he migrated from being Hindu to Muslim family, a Muslim religion, because he really loved Sufi music, and I guess music has no religion. Okay, so it does not matter. But he finally is a masterpiece in the music industry. We love his music. We love his song. We love him. Okay. So, where was A.R. Rahman born? So, I can see some of the answer. Chennai, yes. You know the date. And A.R. Rahman entered the world of advertising. Data has been expired. Oh, no. Yes. 66 Golden Globe Award. Yes. International recognition. Slumdog Millionaire, right? He won the international recognition Oscar Award for Slumdog Millionaire. And do you like A.R. Rahman's music? Of course we like A.R. Rahman music. His music is admirable. His music is something that touches your heart. His music is very different. It's a combination of classic and Western music together. Sometimes he does that, right? He mixed the classical and modern Western music as well. Okay, would you like to sing an A.R. Rahman song? It's not son, it's song for the class. So I love many of his songs, okay, but I won't sing the song here. Okay, it's an online class. Okay, so let's move on. I guess
this listening drill helps you. Now since we have recorded it in the video, so you have an opportunity that you can listen to the audio over and again. Okay, you can watch the video and listen to the audio again and again and try to understand each word and see how much you understand based on your listening. This is how your listening skills improve. Okay, let's move on. Let's talk about your favorite celebrity or celebrities. So I have this king of Bollywood, Mr. Shah Rukh Khan. Okay, so I'm going to talk about my favorite celebrity. Okay, and this is how you can talk about your celebrity. Okay, I like Shah Rukh Khan the most. He's very confident on stage, whether it's anchoring or performing. I like his never give up attitude as he faced many hurdles during his struggle. तो मैं शाहरुख खान को पसंद करता हूं, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हैं स्टेज पर. ठीक है, वो चाहे एंकरिंग कर रहे हो, किसी शो की एंकरिंग करते हैं ना, होस्ट होते हैं, आपने देखा होगा माइक पकड़ के सबको बुलाते हैं, एंकरिंग करते हैं, या फिर परफॉर्म कर रहे हो. आई लाइक हिज नेवर गिव अप एटीट्यूड. नेवर गिव अप एटीट्यूड मतलब जो कभी हार ना माने, क्योंकि उन्होंने अपने स्ट्रगल के दौरान बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस की थी. ठीक है, ही इज गुड एट वॉट ही डज. वो जो काम करते हैं उसमें बहुत अच्छे हैं. ही इज पैशनेट अबाउट हिज वर्क. वो अपने काम को लेकर पैशनेट हैं. आपको भी अपनी लर्निंग को, स्पोकन इंग्लिश की लर्निंग को लेकर पैशनेट होना चाहिए, बिकॉज पैशन से एनर्जी और मोटिवेशन बनता है और फिर आप उसके लिए डिवोट हो जाते हैं. कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस हो जाता है आदमी. ठीक है, He accepts both love and critics of his fans optimistically. वो अपने फैंस का प्यार और क्रिटिक्स मतलब कमियां, जो लोग कमियां निकालते हैं कि यार ये वाला मूवी खराब हो गया, इस वाली मूवी में तुम्हारी एक्टिंग, तो क्रिटिक्स का मतलब होता है शॉर्टफॉल्स. उनको बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं. ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है पॉजिटिव, आशावादी, है ना. ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट दो वर्ड लर्न कर लो आज. ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी और पेसिमिस्ट होता है निराशावादी. सो बी ऑप्टिमिस्टिक. ओके, सो ही इज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी. ही डिजायर्स टू मेक व्यूअर्स हैप्पी. वो कोशिश करते हैं, इच्छा रखते हैं कि जो व्यूअर्स हैं वो खुश रहें. ठीक है, ही कॉन्स्टेंटली चैलेंजेस हिमसेल्फ टू डू बेटर वर्क. वो लगातार अपने आप को चैलेंज करते हैं कि वो बेहतर काम कर सके. आई एडमायर हिज डांसिंग एंड एक्टिंग स्किल्स. एडमायर का मतलब होता है पसंद करना और उनको फॉलो करना. तो उनके डांसिंग और एक्टिंग स्किल्स मुझे बहुत पसंद है. एंड हिज मूवीज ऑलवेज परफॉर्म एट द बॉक्स ऑफिस. और उनकी मूवीज हमेशा बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म करती है. देखो बच्चों, बॉक्स ऑफिस का मतलब होता है पैसा. जब भी एंटरटेनमेंट के बारे में आप बात करते हैं तो बॉक्स ऑफिस का मतलब पैसे से होता है कि उनकी मूवीज पैसा भी अच्छा कमाती है. 500 करोड़, 400 करोड़. ठीक है, ही हैज रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स, है ना. सो दैट्स हाउ यू टॉक अबाउट योर फेवरेट मूवी एंड योर फेवरेट स्टार्स. सो आई वांट यू गाइज टू learn few words and phrases. You already learning grammar structure. I'm already teaching you tenses, modals, and we have recently started the topic voice as well. But बच्चा playlist में आज पूरा आपको डलवा दूंगा कमेंट में. मैं टेक्निकल भैया से बोल दूंगा कि वो प्लेलिस्ट डाल दें. आई थिंक कल भी एक बच्चा पूछ रहा था. ठीक है, तो मैं डलवा दूंगा, है ना. अमजद अली जी, आपको इमरान हाशमी पसंद है या जो इमरान हाशमी मूवीज में करता है वो पसंद है ना. राइट, ओके, सो लेट्स मूव ऑन. Look at the different kinds of films given below and discuss the questions. So I've given you some genre, है ना, category, genre of the movies. For example, war films. Border is a war films. ओके, साइंस फिक्शन फिल्म्स, कोई मिल गया, आपने देखा होगा साइंस फिक्शन है. हैरी पॉटर हॉलीवुड में आपने देखा होगा साइंस फिक्शन है. ठीक है, एक्शन फिल्म्स, कमांडो, फास्ट एंड फ्यूरियस, दीज आर सम एक्शन फिल्म्स. एडवेंचर फिल्म्स, बेबी, या और भी कोई एडवेंचर फिल्म हो सकती है जिसमें खतरनाक एक्ट दिखाए हो. ठीक है, कॉमेडी, गोलमाल. क्राइम फिल्म्स, इत्तफाक, सम मूवी इत्तफाक. हिस्टोरिकल फिल्म्स, पद्मावत, ग्रेट मूवी. उसमें दिखाया, यू नो, हाउ दे द वुमेन ऑफ द राजपूताना dynasty sacrificed their life. Okay, they did not give up. Being a woman,
they did a great sacrifice and they did not give up. Okay, horror films, डरना जरूरी है. So these are genre, है ना, these are films types that we see. ठीक है, तो इस तरीके से आप इनसे familiar हो जाओ so that you can use them in your sentences. So I'm trying to give you all the words and vocabulary. I'm teaching you the structure of the sentences, so you have no excuse why you can't talk about entertainment now. ओके, टेक्निकल भैया प्लेलिस्ट डाल दीजिए चैटिंग में, क्योंकि बच्चे बार बार प्लेलिस्ट के लिए बोल रहे हैं. तो प्लीज़ इसको देखिए ज़रा, ताकि बच्चे सारी वीडियो एक साथ देख सके. तो हम डाल सकते हैं प्लेलिस्ट, उसको प्लीज़ कमेंट में बार बार डाल देना. ठीक है, तो बच्चा मैं कमेंट सेक्शन में बार बार उसको डलवा रहा हूँ, वो बीच बीच में 2-3 बार डाल देंगे तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. I've given you some more phrases here, so you can talk about more in the field of entertainment. Okay, you can use I enjoy, I like, I prefer, सबका मीनिंग सेम है. I enjoy, I like, I prefer, सबका मीनिंग सेम है. Lots of drama, the movie has lots of drama. इस मूवी में बहुत सारा ड्रामा है, तो आप बोलेंगे this movie has lots of drama. ठीक है. Engages the audience, मतलब ऑडियंस को एंगेज कर पाए जो मूवी, तो आप बोलेंगे दिस मूवी एंगेजेस दी ऑडियंस. ठीक है. सडन स्केयर्स, अचानक से डरा देती हैं. हॉरर मूवीज में आप ऐसा यूज कर सकते हैं, है ना, सडन स्केयर्स. एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, कुछ मूवीज होती हैं एकदम से सरप्राइज कर देती हैं, तो आप बोलेंगे दिस मूवी हैज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. कॉमेडी इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज यूजली सेड बाय मोस्ट ऑफ द एक्टर. गिव्स स्कोप फॉर अ गुड स्टोरी, इस मूवी के अंदर एक अच्छी स्टोरी का स्कोप है. ठीक है. एक्शन सीक्वेंसेस, फन टू वॉच, एंजॉय साउंड ट्रैक, गाने अच्छे लग रहे हैं. इंटेलिजेंट राइटिंग, है ना, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी मूवी की. हिस्टोरिकल एक्यूरेसीज, उसमें हिस्ट्री के पॉइंट्स बहुत एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल सही दिखाई गए. लर्न न्यू थिंग्स, कुछ नया सीखने को मिला. स्पेशल इफेक्ट्स अच्छे थे. टेक्नोलॉजी, वाइल्ड इमेजिनेशन, दैट्स व्हाट ऑल यू कैन यूज टू टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट. ओके, मैं अभी कंफर्म कर देता हूं बच्चा वीडियो लिस्ट का आपको. ओके, how now the questions, how many of the above films have you seen? This is how, see, this is the table. Okay, and these are the phrase bank, and these are some questions that you can discuss these questions with yourself. For example, do like this: how many of the above films have you seen? So you can answer it. I have seen 5 films out of the, how many films are there out of these films? I have watched 5 films out of these films, है ना, इनमें से मैंने 5 मूवीज देखी हैं. Which kind of films do you prefer to watch? Support your discussion with reasons. So I would say I prefer to watch historical films because I'm fond of updating and increasing my knowledge so that I can use it in my communication skills. ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं. What is the difference between the following? So war and historical films में difference क्या होता है? So war films usually includes some real story of the war, like Kargil war we have watched, border. Historical films usually give the events of history like Padmavat and so forth. All right. And now I have a song that I want you guys to listen. एक गाना सुनेंगे आप, और ये उस गाने के लिरिक्स हैं. ठीक है, ये टाइटैनिक मूवी का गाना है. I think you must have heard it. Why I'm making you listen to the songs? Because this is how you increase your pronunciation, and listening skills also improves when you read and listen the lyrics of the songs, and you can understand the native pronunciations of the word, है ना, बिल्कुल exact pronunciation पता लगता है. और सॉन्ग है तो आपको एंटरटेनमेंट है, इसीलिए मैंने सॉन्ग रखा है. आज का टॉपिक एंटरटेनमेंट है. सो प्लीज relax and listen to these songs, but
रीड द लिरिक्स। कोशिश करेंगे आप जोर जोर से लिरिक्स को भी बोलें सॉन्ग के साथ, ठीक है। लोगों को पता लग जाना चाहिए कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। जब आप इंग्लिश का गाना गाएंगे तो लोग कहेंगे वाह, लड़का भाई इंग्लिश का गाना भी गा रहा है। हालांकि ये फीमेल सिंगर की वॉइस है, आपने सुना होगा एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स आई सी यू आई फील यू। तो ये सॉन्ग मैं ढूंढ कर चला देता हूँ, एंड दिस इज व्हाट यू गॉट टू डू, यू नो, टू improve your pronunciation and English skills. So let me play the song and you can listen to the lyrics and read the lyrics. You got to do both the things, okay? So just wait and you can have the lyrics here. Lyrics are here. If you can't see the font, I would request you to please enlarge it because yes, it is a little small. अगर मैं zoom करूँगा तो lyrics चले जाएंगे। एक मिनट ट्राई कर लेते हैं। ओके राइट, तो पूरा गाना सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं फर्स्ट एक दो स्टेंजा आपको सुना देता हूँ, रेस्ट यू कैन डू। आपको समझ में आ गया है कैसे करना है, ठीक है। मैं तो सिर्फ आइडिया देना चाहता हूँ आपको। तो कोशिश करेंगे गाने को सुनने के साथ साथ लिरिक्स रीड करने की भी, और हो सके तो सिंग द सॉन्ग लाउडली, अपने मुंह से जोर से गाइए और कॉपी करने की कोशिश करेंगे, है ना। प्रोनाउंसिएशन को कॉपी करेंगे, स्टाइल को कॉपी करेंगे नेटिव स्पीकर के। ओके, आई होप द फर्स्ट 2-3 स्टैंजास आर क्लियर। सो you got the idea why I chose this song, because the song is sung very slowly, right? So you can easily understand what she's saying, and at the same time I've given you the lyrics so you can understand what she's saying and you can try to copy the pronunciation, the style she's pronouncing the words. Obviously it's a song, so there's little stretches when she's singing, but forget about the stretches. Concentrate on the pronunciation part. Okay, so here I've shared some ideas how you can improve your pronunciation, how you can sound like a native speaker. Okay, so with that note, that's it in today's session. I got this much information only, I think. So yes, that's the end of the session today. I hope you really enjoyed it. So please don't forget to appreciate it, because it's a food for the teacher when somebody appreciates his work. Okay, so I hope you're able to learn something from our sessions, from our
trying to teach you something. Well, that's it. Thank you very much for watching the video, for attending the sessions live, and I'll see you tomorrow at the same time, 5 to 6, with more stories on entertainment. I'm not done with entertainment, because entertainment is one of the topic that actually liked by students, and we'll also continue the grammar, active passive voice. ठीक है, अभी मैंने एक ही active passive voice पढ़ाया था कल की क्लास में, present indefinite का. I want you guys to revise it. और प्लेलिस्ट यहाँ पर मैं डलवा देता हूँ, अभी फिर से बोल देता हूँ कि प्लेलिस्ट डाल दें. ऑलराइट, तो प्लेलिस्ट आपको अभी मैं डलवा देता हूँ. वेल, दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच. एंजॉय योर evening and good night. See ya.